Hello, my dear children. Welcome to the channel of Kanishka Tutorials. Hope all of you are safe at home and boosting your knowledge by learning from home through our Ganeshka tutorial channel. On students' demand, today we have brought to you a new video of English Bal Bharati for Standard 4th, Unit 1, second lesson, second part, second fable, that is, The Dog in the Manger. My dear children, you are going to hear another fable today. This fable is also short and it has a lesson. But in today's fable, there are no people. All of the characters are animals. And the animals talk. And this is a third characteristic of fables. Animals act like people. Many of Aesop fables have animals that act like people. हम लोग स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसके डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. स्टोरी का नाम है द डॉग इन द मैंजर. अभी बच्चों, डॉग यानी तो आपको सबको पता है. यस, डॉग यानी कुत्ता. मैंजर यानी लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड. कैटल ईट है केप्ट फॉर इन द मैंजर यानी चरनी. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द fable. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. मतलब एक बार एक कुत्ता एक अच्छी और आरामदायक लेटने के लिए जगह की तलाश में था. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. Here, manger means long open box in a cattle shed. Cattle eat hay kept for them in the manger. यानी चरनी. Hay. Here, hay means cut and dried grass used as a food for animals. यानी सूखी घास. वह कुत्ता एक बैल के चरनी के पास आया और वह आराम करने के लिए कूद गया. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. बहुत गर्म दोपहर थी. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड. थोड़ी देर बाद बैल खेत से वापस लौट आया. ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री. मतलब उस बैल ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करने के कारण उसे अब ज़्यादा भूख लगी थी. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. Stall. Here, stall means part of a cattle shed or stable. Generally, each animal has one stall for itself. तबेला. वह घास जो उसके लिए चरनी में रखी गई थी, वह उसे खाने की योजना बना रहा था. However, when he reached for the hay, the dog saw him. हालांकि जब वह घास खाने के लिए आगे आया तो कुत्ते ने उसे देखा. Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. मतलब चरनी में खड़े खड़े वह बैल पर जोर जोर से भौंकने लगा. Each time that the ox came near the hay, the dog snarl, bark and snap at the ox. Here, snarl means to make an angry sound while showing the teeth. Snap means a sharp noise. मतलब जितनी बार बैल घास के पास आता, वह कुत्ता उसे गुस्से से दांत दिखाता, भौंकने लगता और बैल की तरफ झटपटा पड़ा. He would not allow the ox to eat his hay. मतलब वह बैल को उसका घास खाने की अनुमति नहीं दे रहा था. Oxen are generally peace loving and patient animals. स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा, बैल आमतौर पर शांति प्रिय और धैर्यशील जानवर होते हैं. But finally the ox got upset and spoke firmly. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it. But you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? मतलब अंत में बैल परेशान हो गया और दृढ़ता से बोला, डॉग, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ अपना डिनर शेयर कर सकते हो. मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप न तो घास खा रहे हो, न ही मुझे इसका आनंद लेने दे रहे हो. यह आपके किसी काम का नहीं है. फिर आप मुझे अपना पसंदीदा भोजन क्यों नहीं करने दे रहे हो? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. Here, begrudge means
be unhappy that someone is getting something. मतलब अगर हम खुद किसी चीज का आनंद नहीं उठा सकते तो हमें किसी और को भी उस आनंद से दूर नहीं रखना चाहिए. Okay students, now move with the question and answer. Answer the following questions. First question is, what did the dog do when the ox went near the manger? मतलब जब भी ऑक्स डॉग के नजदीक गया तो डॉग ने क्या किया? And answer is, the dog barked loudly at the ox and would not allow the ox to eat his hay. Each time the ox went near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. Next question is, write the message of this story. मतलब इस स्टोरी में से आपको क्या मैसेज मिलता है? And the answer is, This story tells us that we should be nice and share, especially when someone else needs something more than you do. Or you can write the answer. don't begrudge others what you don't enjoy yourself. Okay students, now move with the next question, that is the second question. Read aloud the following speeches from the lesson. And first question is, what the ox said to the dog in the manger. मतलब ऑक्स ने मैंजर यानी चरनी में बैठे हुए डॉग से क्या कहा? एंड द आंसर इज, डॉग, इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. Okay students, now move with the next question. With the help of your teacher, make a collection of a idiom and proverbs that mention birds and animals. First example is one trick pony. Here, one trick pony means the person has only one ability or good quality that he or she is known for and doesn't have any other abilities. Okay students, now move with the second example. The lion's share. Here, the lion's share meaning of something is the biggest part or portion. Okay, now next third example is hold your horses. Means wait a minute, don't be in such a hurry. And this is end of today's lecture. Thank you for attending. If you like our educational video, then like it, share to your friends and subscribe it. Thank you once again.